أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sicknesses and the kinds of diseases caused by the jinn, especially to females के लिए. The jinn may cause some diseases that affect only women, such as infertility, that has no medical cause. दो किस्म की होती है. एक इंसान naturally infertile होता है, दूसरा वो सिहर या जन्नात के असरात से या आशिक जन्नात के असरात से या फिर उनके घर खानदान में जन्नात चलते आए हैं जो अब उस औरत के ऊपर असर कर रहे हैं, रहम के अंदर घुसे हुए हैं, जो उसको कंसीव नहीं करने दे रहे हैं. तो ये जो मसाइल है जो खासतौर से औरतों के साथ जो आ जाता है इनफर्टिलिटी का, ये क्या होता है अक्सर जहाँ पे मेडिकल कॉज नहीं समझ में आती है, वो ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, जन्नात के असरात से होता है. अल्लाह मुस्तआन. So when tests are performed, it is found that neither spouse, यानी मियाँ बीवी में दोनों में कोई मसला नहीं है, has any medical problem that would prevent pregnancy, but no pregnancy occurs. 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, 4 साल हो गया है, आप टेस्ट कराती जा रही, हर चीज नॉर्मल आ रही है, शौहर की हर चीज ठीक है, औरत की हर चीज ठीक है, लेकिन बस क्या नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे. अल्लाह मुस्तान. Then one of my friends told me that he had been treated by a specialist for 4 years, and the doctor had told him, I am amazed at your situation, for there is no reason why your wife should not get pregnant. He and she were both 100% healthy. दोनों मियाँ बीवी 100% हेल्दी थे, मगर वो 4 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे थे. और जो स्पेशलिस्ट थे वो भी हैरान थे इनके सिचुएशन को देख के. फाइनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिक्रीड दैट दे शुड हैव अ चाइल्ड एंड हिज वाइफ गॉट प्रेग्नेंट. फिर जब अल्लाह ताला की हुक्म हुआ तो वो क्या हो गई, उस औरत ने कंसीव कर लिया. बट इट मे बी दैट देयर इज अ जिन इन द यूट्रस. रहम में, औरत के जो रहम जो जो कोक होती है, जो उसका जो वूम होती है, जो उसका जो यूट्रस का जो इलाका होता है, वहां पे क्या होता है, जिन जाके बैठ जाता है. और इन द रीजन ऑफ द ओवरी हु किल्स द स्पर्म. तो जहाँ वो स्पर्म इम्प्रेग्नेट होता है, जहाँ वो स्पर्म दाखिल होता है औरत के ओवरीज के अंदर, तो क्या हो जाता है, वो जिन जो उसके अंदर बैठा होता है वो उस ओवरी को डैमेज कर देता है या मार डालता है, लिटरली खत्म कर देता है. कि जाहिर सी बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है स्पर्म का ही दाखिला होता है, एक जो जो दाखिल होता है, फिर उसी से क्या होता है, फिर इसके बाद जो है पूरा जो प्रोसीजर शुरू होता है एग फॉर्मेशन का. तो जब स्पर्म को ही मार डालेंगे, उस नुत्फे को जब मार दिया जाएगा, तो फिर कैसे औरत कंसीव करेगी, नहीं कर पाएगी. तो लिहाजा यही हो रहा है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको समझिए. हु किल्स द स्पर्म और damages the eggs. Such cases have medical symptoms, of which we will mention the following. The woman feels intense pain in her back. Lower back में बहुत शदीद दर्द होता है उन औरतों के जिनके साथ ये मसाइल होते हैं. Pain and infection in the area of uterus. UTI infections होने का चांस होता है. Irregular periods. 1 महीना आया, दूसरे महीना गायब, तीसरे महीना गायब, 2 2 महीने नहीं आ रहे हैं. Occasional irregular bleeding. यकायक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. एक नॉर्मल मेंसेस हो चुके हैं, उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर ब्लीडिंग हो रही है. महीने में 2 2 दफे ब्लीडिंग हो जानी. Allah musta'an. The woman may feel anxiety at the time of intercourse and she only does it to please her husband. यानी वो खुद नहीं चाह रही है अपने शौहर के साथ होना, मगर वो जबरदस्ती शौहर के लिए कर रही है. But there are other symptoms which accompany these symptoms such as headaches, nightmares, numbness in the extremities. याद रखिएगा, पाँव और हाथ नम हो जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं ऐसे खवातीन के. सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, तो ये क्या हमने पढ़ा लेडीज के बारे में, वुमेन के साथ ये क्या इश्यूज होते हैं जो बता दिया है यहाँ पे. कि सबसे पहला इफेक्ट क्या करता है शैतान उनके अंदर, शैतान कि उनको कंसीव ही नहीं करने देता है, चाहे जो हो जाए. कैसे, या तो स्पर्म को किल कर देता है, या तो एग फॉर्मेशन को जो है, जो फॉर्मेशन जो पार्ट टिक होता है उसको वो डैमेज कर देता है. सच किसी सब मेडिकल सिम्टम्स, और ये मेडिकली कैसे प्रूव हुआ है इन सिम्टम्स को देखते हुए. इसके बाद जो सिम्टम है, जो सेक्सुअल इश्यूज जो होते हैं वाइफ एंड हस्बैंड को, ये भी कुछ हद तक जिन इसके जो है जिम्मेदार होते हैं. The jinn may also cause impotence in men and lack of sexual response in either spouse, or sometimes premature ejaculation. We will describe the remedy for this in the chapter deals with the witchcraft, inshallah. Tampering with house. अब एक चीज और क्या बताई जा रही है, घर के साथ तोड़ फोड़ करना, या घर के साथ कोई चीज मैंने तबाही करना, डैमेज करना, या फिर घर के साथ कोई तोड़ मटोड़ करना, कि कोई चीज जो है आपके घर में नॉर्मल है, वो चीज कोई चीज रखी हुई थी गायब हो गई,
यकायक कोई चीज जल जा रही है, यकायक जो है आग लग जा रहा है, यकायक कोई मशीन इलेक्ट्रिक कुछ वो हुआ, सर्किट कुछ इशू हुआ और ग्लिचेस हुए, वो चीज जल गई आपकी, नया अप्लायंस जल गया आपका। यकायक जो है, याद रखिएगा जहाँ पे ग्लिचेस होती हैं लाइट की, बहुत ज्यादा लाइट ऑन ऑफ होती रहती है, बुझती जलती रहती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इश्यूज होती है, वहां पे जो है कहा जाता है कि असरात होते हैं, अल्लाह मुस्तान। The jinn may tamper with people's houses, toying with their furniture and burning some of their contents. This is something which really happens, but it is very rare. I will tell some real life stories of such incidents. The Muslimun newspaper issued this carried an article entitled Munif Harbi, fire starts in my house with no cause. Munif Harbi, a Saudi citizen who lives in Al Nasim quarter in eastern Riyadh, says that fires start in every corner of his house with no obvious cause. घर के हर कोने में यकायक आग शुरू हो जाती बगैर किसी वजह के, बिला वजह. Neither he, those who have witnessed these events, nor the civil defense can offer any explanation for these such fires which start in the house and which have virtually turned his life into an unbearable hell. Allahumma jari min nar. Were it not for the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. तो यकायक बिला वजह उनके घर में आग आ जाती, सिविल डिफेंस और जिन जिन से बातचीत की गई, कोई भी इस मसले का हल नहीं बता पाया, लिहाजा उस शख्स की जिंदगी क्या होती जा रही थी, एक तरीके से अजाब होती जा रही थी। अल्लाह मजरी मिनन नार। ये एक, जब तक अल्लाह ताला की हुक्म से चीज बदली नहीं. Similarly, Akhbar al-Yawm newspaper issued so and so date published an article in the presence of the chief of the Georgia Fire Brigade. Fires start in the doctor's house every half an hour. Every half an hour. Major Rajab Sultan, the fire chief in the southern region of Sohaj, stood astonished at the door of the forensic laboratory in the security forces office in Cairo, looking for something he had lost. He had come from Sohaj on a specific and strange mission, carrying a bag in which were some samples taken from the remains of a strange fire, which were to be analyzed in order to find the causes of the fire. But to his surprise, he found that the bag had vanished before he even entered the building that housed in the forensic lab. Major Rajab told the strange story, saying, "Last week, Dr. Usman Rifai, who works in the Georgia General Hospital, got in touch with me and told me that the fire had broken out in his house half an hour ago, and he called the fire brigade to save him and his family. Despite the strangeness of this message, I went with my men and equipment to his apartment and only find the traces of a fire in some linens and clothing. The doctor told me that after he had come from work, home from work, whilst he was eating lunch with his wife and two children, suddenly a fire broke out in the bedroom. He called his neighbors to help and they put the fire. After that, the fire started to break out in everything that contained clothes every half an hour. A few minutes later, I was startled by a fire that broke out in front of me inside a wardrobe. My men and I put out the fire, and I discovered that the fire had started by itself on one shelf of the clothes only. From inside the apartment, I contacted General Al Sayed Hassan, the assistant of the Minister of the Interior and the Chief Security of Sohaj, via radio and told him that the situation. He ordered me not to leave the apartment, and he sent word to the chief of police and the criminal investigators and forensic experts to cooperate with me in dealing with these fires. Major Rajab Sultan added that doctor's apartment was crowded with security forces and firemen who checked every inch of the apartment, searching for the cause of the fire. They checked out the possibility that there might be some powder which had helped the fire to start itself, to ignite, but they could not find any cause of the fire ignition. Then, in front of all the security forces, fire started to break out every half an hour in various places throughout the apartment. Allah Mustaan. In the children's bed when they were asleep, in the furniture, even clothes soaking in the water burst into flame. The firemen were rushing with their equipment to extinguish the fires as soon as they started. In the midst of the terror of the doctor's family and the cries of his children, the security men and firemen continued to work in the doctor's apartment.
until the next day, but they failed to find any cause of the fires which broke out regularly after every half an hour. The chief of security issued instructions that some of the firemen should stay in the apartment with the family to protect them from the fires. And he ordered me to go to next morning to Cairo on a special mission, taking with me a bag containing a sample of the burned clothing to the forensic lab of analysis and find out the scientific cause for these fires. At the door of the forensic lab, I discovered that the bag containing samples from the fire had disappeared, and I did not know how that happened. Major Rajab Sultan returned to Sohaj to get another sample. He was still astonished and kept asking himself, how could these fires break out when I am fire chief? How can we provide protection to the doctor's family against these strange fires? So we need another kind of fire brigade to achieve this mission. The second story was narrated by Ibn Qayyim rahimullah. It was narrated that Abu Nadr Hashim ibn al-Qasim said, a stone was thrown at me in my house, and a voice said, O Abu Nadr, move away from our area. I felt very distressed by that, so I wrote to Ibn Idris and al-Muharibi and Abu Usama in Kufa. Al-Muharibi wrote back to me, there was a well in Medina which used to dry up. Some travelers camped nearby, and the residents complained to them about that well. They called for a bucket of water. Then they soak. Then they spoke these words and poured it into the well. Fire came out of the well and was put out at the top of the well. Those words are, in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, we are under the protection of Allah subhanahu wa ta'ala, whom nothing is impossible, and by the glory of Allah subhanahu wa ta'ala, which cannot be defeated or undermined, and by the power of Allah subhanahu wa ta'ala and the all strong, we seek protection. By all his most beautiful names, I seek protection from the devils and from the evil of the devils amongst the mankind and jinn, from all evils, visible and invisible, from the evil that comes out at night and hides by day, and hides by night and comes out during the day, and from the evil of which he has created, and from the evil of Iblis and his troops, and from the evil of every beast whose forelock you hold, Ya Allah. For my Lord is on straight path, and I seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala, by which Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, and Ibrahim alayhi salam, who fulfilled or conveyed all that Allah Ta'ala ordered him to do or to convey, sought refuge, and from the evil of that which he has created, and from the evil of Iblis and his troops, and evil of everything that seeks to cause harm. I seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala, all hearing, all seeing, and the accursed shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ كَوَاكِبَ وَحِفْظٍ مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. मैं मैं सोची थी कि मैं कैसे आप लोग के साथ ये आयत करती। देखिए आज अल्लाह ताला ने खुद अपने आप ये आयत मेरे सामने रख दी है, 1 से 10 सूरह साफात की आयत। तो क्या बताया गया कि इब्न जौज़िया रहमतुल्लाह के दौर में एक आदमी था, उसने किसी के घर पे ये पत्थर फेंका उनके घर के ऊपर, ये कहते हुए कि मेरे रास्ते से हट जाओ। ठीक है, ये चीज जब हुई तो वो बंदे जो थे बड़े घबरा गए, तो उन्होंने फौरन ये खत लिखा अपने तमाम दूसरे जो भी उस वक्त के जो शयूख थे या जो भी उस वक्त के जो उलेमा थे, उनको उन्होंने लिखा खत। तो उस खत के बाद जो ये कहा गया कि वहां पे कुआं है मदीने में, वहां पे जाइए और ये फेंकिए, और उन यानी कुछ कागज पे लिख के फेंका गया उस कुएं के अंदर। फिर जब वो चीज फेंकी तो फौरन से क्या हुआ, उसके अंदर से एक आग सी निकली उस कुएं के अंदर से, और फिर और वह उस पे क्या लिख के डाला गया था, वो ये पूरी एक जो है अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए ये दुआ लिखी गई, और उसके बाद सूरह साफात पढ़ी गई या उसको डाला गया, पढ़ के किया गया। तो सूरह साफात की आयत क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कसम है उन फरिश्तों की जो सफ़ों में खड़े होते हैं,
एंड बाय द एंजल्स हु ड्राइव द क्लाउड्स, और जो जो बादलों को जो है चलाते हैं अच्छी तरीके से, इन अ गुड वे, बाय दोज एंजल्स हु ब्रिंग द बुक, और वो जो किताब लाते हैं और कुरान को अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों पे नाजिल करते हैं। बेशक अल्लाह ताला ही एक ही वाहिद रब है जो आसमानों और ज़मीन के और उसके दरमियान है। द लॉर्ड ऑफ एवरी, हर हर चीज़ के, हर उस नुक्ते से जहाँ से सूरज का निकलना होता है। Verily we have adorned the near heaven, बेशक अल्लाह ताला ने करीब के आसमानों को सितारों से खूबसूरत बना दिया है। And to guard against every rebellious devil, और हर उस बदतरीन शैतान के लिए क्या है, अल्लाह ताला ने उन सितारों को बचाने का जरिया बनाया। They cannot listen to the higher group angels, for they are pelted from every side. जब भी ये शैतान जाते हैं ऊंचे आसमानों पे फला की बात को सुनने के लिए, अल्लाह ताला क्या करते हैं, उनको इसी सितारों से मरवा देते हैं, पिटवा देते हैं। pelted, pelted यानी कंकरी को मारना। इस तरीके से शैतान को इन सितारों से मारा जाता है। except such as snatch away something by stealing, इल्ला उसके जो कोई चीज कोई खबर निकाल ले जाए आसमानों से चुरा करके। एंड दे आर परसुएड बाय अ फ्लेमिंग फायर ऑफ पियर्सिंग ब्राइटनेस, अल्लाह ताला उनको क्या करते हैं, उन सितारों के जरिए उनको मरवाते हैं, दरवा के हटवा देते हैं। Abu another said, so I took a bucket of water, then I spoke these words into it. तो क्या बताया जा रहा है कि अबुल नादर जिनके पास ये खत लिखा गया, उन्होंने क्या किया, एक बाल्टी पानी लिया, उस पर तमाम ये ताऊस पढ़ा, ये दुआ पढ़ी, उसके बाद सूरह साफात की पहली 10 आयत पढ़ी उन्होंने। ठीक है। एंड आई स्पोक दीज वर्ड्स इनटू इट, देन आई स्प्रिंकल इट एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस। तो फिर वहां पे उनके घर गए, उन्होंने क्या किया, हर कोने में सूरह साफात और ये दुआ मांग के उन्होंने हर कोने पे छिड़कना शुरू किया। They, the jinn, screamed at me, saying, "You have burnt us. We will leave you. We will leave you alone." अल-वहाब अल-सैयद बाय इब्न अल-क़य्यिम रहिमहुल्लाह, ये उनकी किताब से निकाली गई पैसेज। तो क्या हुआ सूरह साफ़ात? किसी ने मुझसे सवाल किया कल कि क्या हम ये जो पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक है? सूरह साफ़ात की जो आयत जो आपको बताई जा रही है रुकिया में पढ़ने के लिए, क्या आज आप उसके ऊपर शक करेंगी? आपको वो आयत बताई जा रही है रुकिया में जो बताया गया है, उसमें आपके लिए 100% फ़ायदा है। इस बात को आप क्यों नहीं समझ पा रही? यहाँ पे अबू नदर ने ये ताऊज़ पढ़ा और उसके बाद सिर्फ सूरह साफ़ात की पहली 10 आयत पढ़ी है। इसके बाद जो भी जिन जो उनके घर में उनको धमकी दे रहा था, कह रहा था कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वो क्या चिल्ला के कहता है कि अबू नदर ने अल्लाह ताला के हुक्म से इन आयत को पढ़ के, उस दुआ को पढ़ के उनको जलाना शुरू कर दिया। यानी जिन जल रहे हैं, ताज्जुब की बात है ना, मगर जी हाँ जल सकते हैं। जैसे इंसान मिट्टी का बना है और दूसरा इंसान उसको मारता है तो उसको क्या होती है, तकलीफ होती है। उसी तरीके से ये जिन आग के बने हुए हैं, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से ये भी जलाए जा सकते हैं भी अल्लाह ताला। वो भाग गए, वी विल लीव यू अलोन। शेख अली इब्न मुसर्रफ al Umari told a story in one of the lectures about a fire that started by itself in the house of Hadban in the vicinity of Medina al-Munawwara में। अब बताइए, after the fire had been put out, it started again, and the civil defense forces failed to discover the cause of the fire until Sheikh, may Allah preserve him, came and recited the Quran in that place and expelled the jinn who had committed this act of aggression against the inhabitants of the house. तो ये भी एक तरीके से जुल्म है कि आप घर में रह रही हैं, वहां पे फला जिन पहुंच के क्या करते हैं, वहां पे यकायक आग लगा दी, उनको परेशान करने लग जाते। ये जुल्म है, ये ऑपरेशन है, ये अग्रेशन है ये। तो जो शेखुल इस्लाम थे वो आए, उन्होंने जो भी तिलावत की, करने के बाद फिर क्या हो गया, उस जिन को वहां से बाहर निकाल दिया गया। सीधी सी बात। Although it is possible for such events to occur, they are extremely rare, and we must ascertain whether it is in fact that the work of the jinn, because the liars and the charlatans make up many such stories for personal motives, as in the following story, which was told by Sheikh al Yasin Ahmad Aid, who said a man died not long ago and he left behind a beautiful house that was somewhat isolated from the other houses. That house was huge, with many rooms and finely decorated. In the courtyard of the house, there was a pool of marble, well made, surrounded by statues in various shapes and colors, from the mouths of which water flowed. तो एक बड़ा खूबसूरत सा बंगला था किसी का,
विला हो रहा था वो, और वो थोड़ा सा आइसोलेटेड था, थोड़ा बाहर की तरफ था, और घरों से बहुत ही मुख्तलिफ और खूबसूरत था वो घर। उसके जो स्विमिंग पूल का जो एरिया था, वहाँ पे अलग अलग किस्म की मूर्तियां थी जिसके मुंह से पानी का फवारा गिरता। That a man had no children to inherit from him, so the house was left empty after he died, and his relatives agreed to sell it in the hope that it would bring a great deal of money. No sooner had they put it up for sale, but the rumors began to spread that it was haunted by jinn, and that was an ifrit inside it. These rumors spread until they became the talk of the town, discussed by people in their evening gatherings. If anyone disagreed and went to that house at night, he would come back in the morning believing that he was haunted by devils. People were no longer interested in buying it, and the heirs feared bad consequences, especially after someone came to buy it and offered a quarter of the price. But before their heirs were able to take the money, a brave young man who had heard about the house and what people were saying about it came along. He was one of those who did not care about the jinn or fear ifrits, and he promised them that he would he would expel the evil जो भी उसके अंदर था, the jinn, and catch the ifrit or expel it in return for money. They accepted his offer and gave him half of the reward. In the evening, that young man went, taking with him a revolver in case he needed. And when he reached the house, he rested for a while, and after extinguishing his candle, he fell asleep. After a while, he felt a hand pulling the blanket off him. So he held on it with all his might and said, "Who is pulling the blanket off?" A voice said, "I'm Ifrit, and I have to take the blanket, otherwise I will possess your body. Otherwise, I'll possess your body." The young man let the blanket go, then the Ifrit fell upon his back. The young man stood up and sat on the chest of the Ifrit and put the gun on his head. He said, "Tell me who you are." The Ifrit was very scared, so he said, "Let me go and I will tell you who I really am." The young man said, "Speak, O Ifrit." He said, "I am not an Ifrit or a jinn, rather, I'm a human like you. The only difference between us and is that I'm very black and ugly." So he let him go, and it lit a candle to see who he was, and he saw a naked black man. The young man said, "Oh, tell me, O black man, why are you here in this place?" He said, "Necessity brought me here because I'm a poor man with no income and I have a large family and no one is taking care of them except me. I went to a man to find me some work to live in, and he told me to come to this house every night and stay here. And he told me that if I thought someone was approaching this house, I could clap my hands and beat on the surface, and that he had prepared for his purpose. If I saw that man was audacious and didn't care about these noises, I was to turn on the taps so that water would come out of the mouths of the statues. Then I was to climb up on the roof and scream with different voices to scare him. Then he told me to keep the secret. When the young man heard the story, he took the man with him and handed him over to the heirs. He told them this his story and became clear that the man who had hired this black man was the man who wanted to buy the house for a low price. तो ये क्या था बेसिकली एक तरीके से स्कैम किया गया लोग को धोखा देने के लिए। तो ये होता है कि लोग अलग अलग किस्म की चीजें करते हैं, और अल्लाह ताला रहम फरमाए। कभी कभी जरूरी नहीं था कि हम हर चीज को जो है असराती जिन्नात से हम उसको जो है टैली करें। कभी कभी लोग का जो है शर, इंसान का ही शर काफी होता है। हम कहते हैं ना, युवसविसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो शर सिर्फ जिन से नहीं है, शर इंसान से भी है। हमारे जो राखी साहब ने हमें साफ बताया कि जब एक केस उनके पास है, इस केस पे जब डील कर रहे थे, तो जब वो जिन हाजिर हुआ उस आदमी के अंदर, तो उस जिन ने कहा कि भाई, हमें आप लोग परेशान कर रहे हो फला के अंदर घुसवा करके, फला को नुकसान पहुंचवा करके। आप खुद आदमी आदमी का दुश्मन बना बैठा हुआ है। यही है ना कि अल्लाह ताला से हम अपनी हिफ्ज अमान की दुआ करें। मैं आप लोग को बता रही हूँ, रुकिया बिल्कुल ना छोड़िए। तीन कुल है, आयतुल कुर्सी है, नमाज से तरीके से पढ़िए, बावजू रहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या करे, बेहतरीन हमारे अल्लाह ताला हमारे लिए हिफ्ज अमान का हमारे लिए